Hello everyone, good morning. Welcome back to today's live session. And today is day 17 of our final 50 AIAPGET preparation strategy. So today I'm not live with you all. This is just a pre-recorded video, but you can watch it at the same time because I'll upload it exactly at the same time. So today we have discussed till 2020 AIAPGET question paper, and today we are going to start with 2021 question paper. This is a question paper which I have given exam that year and I have cracked it. So AIAPGET and got admission in NIH by cracking this only question paper. So this one is a little special for me. So yeah, let's get started. So question, again the same pattern has been repeated here which we saw in last year's question paper. That is, last year means 2020 question paper, that first all the questions of allied subject were asked and then homeopathic subject, and this time in homeopathic subject they started with organon of medicine and then second materia medica questions were asked. So the first question here goes like, all of the following are symptoms of tarantula hispanica एक्सेप्ट, मतलब ऑप्शंस जो दिए हुए हैं दे आर आस्किंग कि ये सब सिम्टम्स टैरेंटुला हिस्पैनिका के हैं, कोई एक सिम्टम नहीं होगा, यू हैव टू सेलेक्ट दैट. ओके, नाउ द फर्स्ट ऑप्शन इज कंप्लेंट्स आर वर्स बाय रबिंग अफेक्टेड पार्ट. सेकेंड, एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस, मस्ट कीप इन कॉन्स्टेंट मोशन. थर्ड, sensitiveness to music, and fourth is walking aggravates all complaints. Okay, so these are the four options and they are asking which is not the symptom of tarantula hispanica, means except बोला है, ठीक है. So now tell me, extreme restlessness definitely we know about tarantula, है ना, must keep in motion, that is true. Then sensitiveness to music also we know that about tarantula. Walking aggravates all the complaint. You can see this symptom is directly given in Allen's keynote. So yeah, that is also true. Now one line is that complaints are worse by rubbing affected part. Okay, is it true or false? Okay, so is it worse by rubbing affected part or is it better by rubbing affected part? Okay, so when we see in tarantula, let's just see here once. When we see tarantula, you will find that too in the last modalities part, if you check that there will be amelioration by rubbing affected part. So it is not worse. Okay, it is not worse by rubbing affected part, it is better by rubbing affected part. So the option A is incorrect. Okay, and हमको जो पूछा गया था कि एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट में हम सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन ए. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इट इज वर्स by rubbing affected part, because the correct thing is that tarantula is better or ameliorated by rubbing the affected part. Okay, next is obstinate constipation for year, rectum seems tied up with strictures. When enema was used, the agony of passage was like labor, is a symptom of. Okay, I am repeating again. ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन फॉर ईयर, इतने सालों से मतलब कॉन्स्टिपेशन है. ओके, एंड रेक्टम सीम्स टू टाइड अप, मतलब स्ट्रिक्चर से मतलब बांध, ऐसा लग रहा है कि रेक्टम जो है बांध दिया गया, स्ट्रिक्चर हो गया है कि पास ही नहीं हो पा रही है स्टूल. ओके, एंड जब एनिमा दिया गया पेशेंट को तो जो पेन था, द अगोनी वाज लाइक लेबर, लेबर में जैसा पेन होता है वैसा पेन पेशेंट को हो रहा था विद द पैसेज ऑफ स्टूल. ये सिम्टम किस में आपको मिलेगा? ओके, इज अ सिम्टम ऑफ ऑप्शन ए एलुमिना, ऑप्शन बी ओपियम, ऑप्शन सी प्लम्बम एंड ऑप्शन डी इज सिफिलिनम. ओके, बताओ अब क्या है इसका आंसर, विच इज द करेक्ट आंसर. अभी आप देखोगे देयर इज एलुमिना, देयर इज ओपियम,
देयर इज प्लम्बम में, तीनों में भी बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन वाली ये मेडिसिन हमें पता है कॉमनली। ऑप्शन क्योंकि ऐसे ही देते हैं जिससे आप कंफ्यूज हो सके ना कि किस में है, लेकिन ये एग्जैक्ट लाइन आपको किस मेडिसिन में मिल रही है लिखी हुई, ठीक है। सो और क्वेश्चन हमेशा ऐसा समझना कि बहुत जिसका ऑब्वियस सा आंसर हो वो क्वेश्चन या वो ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है, वो क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है। जैसे कि तुरंत आप समझ जाओ ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा उसको ट्रिकी करके देने मतलब ये पेपर सेटर का काम होता है। तो हियर यू विल सी कि इतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हमें मिल रहा है विच मेडिसिन। आई रियली होप कि आप लोग सब इसके सही आंसर दोगे। विल जस्ट चेक वंस एंड आई विल गिव यू द रेफरेंस द आंसर, ओके। Okay, so the correct answer to this question is option D, that is syphilinum. Okay, the syphilinum is answer, not alumina phyto or not alumina plumbum or opium. The answer is syphilinum, and here you will see on page number 283 in Allen's keynote आपको last line जो लिखी है, obstinate constipation for years, rectum seems tied up with strictures, when enema was used the agony of passage was like labor, okay। लेकिन उसके आगे ये भी ध्यान रखो ब्रैकेट में और 2 मेडिसिन दी हुई है, लैक्टैन एंड ट्यूबरक्यूलिनम, ओके। तो अगर ऐसा क्वेश्चन सेम यही लाइन लिखी होती है और ऑप्शन में अगर आपको तीनों मेडिसिन दी होती, लाइक सिफिलिनम, लैक्टैन एंड ट्यूबरक्यूलिनम, तो तीनों भी इसका आंसर होता था, ठीक है, ये याद रखना। ऑल 3 ऑफ देम हैव दिस टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन, ओके। सो आंसर इज सिफिलिनम, ओके। नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज योर मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें 2 कॉलम है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, एंड लिस्ट 1 says list 1 is symptom and list 2 is about medicine, okay। So first symptom is headache, better by conversation, बात करने से headache कम हो जाता है, which medicine? Options are natriumur, lithium carb, delcamera और carbolic acid, okay। बताओ, आई एम वेटिंग कि आप लोग इसका आंसर सही बता पाओ। एक एक करके हम लोग देखेंगे। फर्स्ट इज हेडेक इज बेटर बाय कन्वर्सेशन, सो इज इट natriumur, इज इट lithium carb, इज इट delcamera और इज इट carbolic acid? Okay, so it is delcamera. In delcamera the headache is ameliorated by conversation, बात करने से सर का दर्द कम हो जाता है delcamera में, ओके। नाउ हेडेक, अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, एक लाइव सेशन में हमने ये चीज़ की भी है, जहाँ पे वी हैव डिस्कस डिफरेंट कैरेक्टर ऑफ हेडेक, और मैंने आपको बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ को अच्छे से पढ़ना है और मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट करना है डिपेंडिंग ऑन द साइड, डिपेंडिंग ऑन द सेंसेशन, डिपेंडिंग ऑन द मोडालिटीज, ओके। और अभी देखिए ये क्वेश्चन सेम उसी चीज़ पे बेस्ड है, इसी एक्सपीरियंस पे मैंने आपसे वो चीज़ शेयर की थी हेडेक का, आपको इनफैक्ट हर एक चीज़ का, स्टूल का, यूरिन का, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन पेपर में हमने देखा था 2017 के दैट यूरिन एंड स्टूल का कैरेक्टर डायरेक्ट पूछा गया था। मैच द फॉलोइंग, यूजुअली मैच द फॉलोइंग में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो हेडेक बेटर बाय कन्वर्सेशन इज delcamera। नाउ नेक्स्ट इज हेडेक इज बेटर बाय ड्रिंकिंग ग्रीन टी, ओके। विच मेडिसिन हैज हेडेक बेटर बाय ड्रिंकिंग ग्रीन टी? कौन सी मेडिसिन में होता है ग्रीन टी से हेडेक कम, ओके, बताओ। ऑप्शंस आई गिव, दैट इज natriumur, lithium carb and carbolic acid, ओके। विच मेडिसिन बेटर बाय ग्रीन टी लिखा हुआ है, ठीक है। लेट्स जस्ट चेक, आई होप आप लोग आंसर दे रहे हो। ओके, तो ऑप्शन आंसर इज कार्बोलिक एसिड। हेडेक
better by drinking green tea is carbolic acid. Third one is headache is better by sleep. सोने से किस में आराम हो जाता है? Headache is better by sleep. The options are natrum mur or lithium carb. Is it natrum mur or is it lithium carb? Okay, better by sleep. So the answer is natrum mur. Okay, the headache is better by sleep is natrum mur, and headache is better by eating. खाने से headache कम हो जाता है. The medicine is lithium carb. So we have headache better by conversation, Delcamera. Headache by green tea, carbolic acid. Headache by sleep, natrum mur, and headache by eating, lithium carb. Okay, better, all better by this. Okay, so ये सब की modalities आपको अच्छे से पता होनी चाहिए. Different character and different modalities of headache. Okay, now next is next question is asthma in the aged with blue skin is a symptom of. Okay, aged में asthma हो रहा है और specifically for blue skin बोल रहे हैं. ठीक है, so asthma in the aged with blue skin is a symptom of Carbovec, Cupramet, Drosera or Senega. Okay, which is the answer? Which is the answer to this? ब्लू स्किन. ऑलरेडी हिंट आपको काफी अच्छा मिला है इसमें. बताओ, एस्थमा, ओल्ड एजेड एंड ब्लू स्किन, सारा हिंट मिल गया. बताओ, आई होप आंसर आप लोग करेक्ट दोगे इसका. एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कार्बोवेज. ओके, द आंसर इज कार्बोवेज. एस्थमा ऑफ द old aged with blue skin is carb. Okay, now next is a patient suffering from quinsy complains of pain as if splinters in throat accompanied with nasal discharge smelling like old cheese. Okay, he has a feeling as if wind were blowing on some part. The indicated remedy is. Okay, क्या क्या है, क्या बोला है कि ये पेशेंट है क्विंसी. ओके, टॉन्सिलाइटिस से सफर कर रहा है पेशेंट और सेंसेशन थ्रोट में ऐसा होता है एज इफ स्प्लिंटर्स है. ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, नेजल डिस्चार्ज हो रहा है और नेजल डिस्चार्ज जो हो रहा है इसका स्मेल कैसा आ रहा है, लाइक ओल्ड चीज. ओके, एंड इट हैज अ फीलिंग एज इफ विंड वर ब्लोइंग ऑन सम पार्ट. ओके, विंड ब्लो हो रही है ऐसा उसको फीलिंग होता है, सेंसेशन होता है. एंड द मेडिसिन, इंडिकेटेड मेडिसिन इज हेपारसल्फ, मर्क्सोल, नक्सवामिका और सानिक्यूला. Okay, which is the indicated medicine for this complaint? What do you think is the answer to this question? Or is it nasal discharge? Nasal discharge is like old cheese. Quinsy में splinter का sensation. Okay, और wind is blowing, यानी कि चीनी patient है ना. Which one? Heparsals, Merksol, Nexvomica और Sanicula. Okay. So the answer to this question is heparsulf. Okay. Next is always feels better by walking slowly about, although weakness obliges the patient to lie down. Okay, symptom बताओ, ये बहुत easy है, इसको तो ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है, but yes, I'll give you option. So जब slow walking से amelioration, which medicine? Ferromet, Aliiod, Pulsatilla, Rostox. These are the options, and the correct answer, I don't think there is need to say, but yes, the answer is Ferromet, of course. Walking slowly is Ferromet. Then match the remedies. अब दोबारा से मैंने आपको बताया था रिलेशनशिप सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो हियर ऑल्सो क्वेश्चन फ्रॉम रिलेशनशिप दैट यू हैव टू मैच द मेडिसिन विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन. And the options here, the column A is iodine, sulfuric acid, calcarea phos and ethusa. Okay, and options अब आपको बताने. तो सबसे पहले you have to say which is a complementary medicine of iodine. Is it calcarea carb? Is it lycopodium? Is it pulsatilla? Or is it ruta? Which one? Iodine की complementary medicine.
which one? Iodine की complementary medicine is lycopodium, correct. And B is sulfuric acid. Sulfuric acid की complementary medicine is, according to it is pulsatilla. Calcarea fos is ruta, and ethusa is calcarea carb. Okay, so iodine is lycopodium, sulfuric acid is pulsatilla, calcarea fos is ruta, and ethusa is calcarea carb. Then the next question is, you have to match the common name with the medicine. The first option is daisy. So daisy is a common name of ABS canadensis, Mesothelium, Clematis erecta, or Bell's spur. So this is very easy. Daisy is the common name of Bell's spur. And Virgin's bower. Okay, Virgin's bower is a common name of ABS canadensis, Mesothelium, or Clematis erecta. Virgin's bower is a common name of Clematis erecta. Spurge olive. Okay, spurge olive is common name of Mesothelium. Okay, spurge olive is a common name of Mesothelium. And hemlock spruce is a common name of option A की बचा ABS canadensis. So daisy, Bell's spur, Virgin's bower is Clematis erecta, spurge olive is Mesothelium, and hemlock spruce is ABS canadensis. Okay, so these are all the common name. ये भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है. ठीक है, if you haven't watched that video, आप जाकर playlist में चेक कर सकते हैं. In the final 50 AIAPGET preparation strategy नाम से एक playlist बनी हुई है on the channel. You can go and check that video, जहाँ पर आपको सारे common name का discussion मिल जाएगा. Okay. Now next one is, a 15-year-old girl has spasmodic paroxysmal cough since 2-3 weeks. Now the cough is cough is aggravated in morning when she gets expectoration, and it also gets aggravated reading aloud and when in company of others. Okay, and the indicated remedy is, तो एक लड़की है 15 इयर्स की और उसको बहुत ज़्यादा कफ है, 2-3 वीक से कफ है. कफ बढ़ जाती है मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टोरेशन भी होता है. व्हेन शी रीड्स अलाउड तब भी कफ ज़्यादा होती है, और जब दूसरों की कंपनी में वो रहती है तो कफ और फील होती है. ठीक है, सो द मेडिसिन इज एम्ब्रोग्राइशिया, एग्नेशिया, पल्सटिला और स्टिक्टा पल्मोनरिस. विच इज द करेक्ट आंसर? उसमें एक स्पेसिफिक लाइन मेंशन की है जिससे आपको आंसर बहुत इजीली पता चल सकता है. ओके, मोडालिटी जब दी है कि इन द मॉर्निंग बाय रीडिंग अलाउड एंड इन द कंपनी ऑफ अदर्स. ओके, एंड द मेडिसिन, इंडिकेटेड मेडिसिन इज इट इग्नेशिया, एम्ब्रोग्राइशिया, पल्सटिला और स्टिक्टा? ओके, विच इज द करेक्ट आंसर? Okay, so the answer is अभी देखो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज एम्ब्रोग्राइशिया. और एम्ब्रोग्राइशिया में जब आप पढ़ोगे इन द बुक एलेंस की नोट में अगर आप देख रहे हो, सो यू विल फाइंड कफ में यू विल फाइंड द सिम्टम लाइक वायलेंट कफ इन स्पास्मोडिक पैरोक्सिस विथ इरेक्टेशंस एंड हॉर्सनेस, वर्ड्स व्हेन टॉकिंग और रीडिंग अलाउड. Okay, evening without and morning with expectoration, moving cough but without crowing inspiration. Okay, now this is line given in Allen's keynote. अब इसके अंदर एक और important चीज जो इन्होंने ऐड की है that is when in the company of others. ये important addition इन्होंने किया है. You can see जब modalities आप देखोगे एम्ब्रोग्राइशिया की, in aggravation you will find the presence of many people, aggravation by presence of many people. तो सिर्फ ये एक लाइन ऐड होने से मेडिसिन एम्ब्रोग्राइशिया होती है. अदरवाइज दूसरी और इंडिकेटेड मेडिसिन भी यहाँ पर हो सकती थी, ओनली बेस्ड ऑन दी पैरोक्सिस्मल कफ
इन द मॉर्निंग एंड दिस रीडिंग अलाउड, इस बेस पे तो और भी मेडिसिन रह सकती थी, बट लास्ट लाइन जो है उसकी वजह से द आंसर बिकम्स एम्ब्राग्राइशिया. ओके, सो इट इज एम्ब्रा. नाउ इन द next is in the intermittent fever of cinchona, the characteristic symptoms are A. Paroxysms anticipate 2-3 hours each attack. B. Thirst before chill, little and often. C is intense thirst during heat. D is profuse sweat on least exertion. Okay, so you have to choose the correct answer from the options below. So ऑप्शन उन्होंने दिया है कि कौन कौन सा करेक्ट है. ए बी सी, ए बी डी, ए बी डी, ए बी सी एंड डी. इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है. ठीक है, तो कोई 3 ही ऑप्शन इसमें से करेक्ट है. कौन सा वाला करेक्ट है आपको बताना है. कि सिंकोना का जो इंटरमिटेंट फीवर है उसका पैरोक्सिम्स होता है. पैरोक्सिम एंटिसिपेट होता है 2-3 घंटा पहले अटैक आने से. थर्स्ट बिफोर चिल होती है. ठीक है, इंटेंस थर्स्ट ड्यूरिंग हीट भी होती है. प्रोफ्यूज स्वेट लीस्ट एक्सर्शन भी होता है. सो व्हाट आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ दिस इंटरमिटेंट फीवर ऑफ सिंकोना. सो हियर यू विल सी ऑप्शन ए तो करेक्ट है कि पैरोक्सिन काफी पहले हो जाता है, 2-3 घंटा पहले होता है अटैक के. ठीक है, देन बी इज chill, thirst before chill होती है. It is little and often. Okay, and last is profuse sweat on least exertion. Okay, so thirst heat में नहीं होती है. ठीक है, there is no thirst during heat, but there is thirst during chill, and there is profuse sweat while exertion. Okay, during exertion, least exertion. Sorry. So yeah, option ये सारे हैं इसके. Now next is according to J.T. Kent's lectures of Materia Medica, which remedy has anxiety and impulse to do violence when keeping still or during rest. Okay, anxiety होती है और कुछ violence करने का मन करता है जब वो अगर शांत अकेला बैठा है या कोई रेस्ट कर रहा है तो. Which medicine? Heparsulf, iodum, Mercosol और Nux vomica. So which is the correct answer? Okay, क्या है, वायलेंस करने का मन होता है. ठीक है, जेटी केंट ने किस मेडिसिन के लिए बोला है. व्हेन एट रेस्ट. द मेडिसिन इज iodum. Okay, the correct answer is iodum. Now given below are 2 statements. assertion और reasoning वाला क्वेश्चन है ये. So ए और आर लिखा रहेगा, आपको बताना है. सो ए बोल रहे हैं कि जिंकम मेट मस्ट नॉट बी यूज बिफोर और आफ्टर नक्स वोमिका. जिंकम मेट को नक्स वोमिका के पहले या बाद में यूज नहीं करना चाहिए. दूसरी चीज बोल रहे हैं कि जिंकम मेट एंड नक्स वोमिका हैव एन इनिमिकल रिलेशनशिप. ओके, सेकेंड स्टेटमेंट दिया है कि जिंकम और नक्स वोमिका का इनिमिकल रिलेशनशिप है. अब बताओ क्या करेक्ट है. कि ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, A is true, R is false, or both A and R true, but R is not. R is the correct explanation, or R is not the correct explanation. Okay, so which one? Zincum का और नक्स वोमिका का क्या रिलेशनशिप है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. अगर ये पता होगा तो आप आंसर इसका करेक्ट दे पाओगे. ठीक है, कि जिंकम को हम क्यों यूज नहीं करते हैं. पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये सही है क्या कि बिफोर और आफ्टर नक्स वोमिका के जिंकम को यूज नहीं करना है. Is it correct or not? So this is correct, है ना. This is true. कि we should not use it before or after जिंकम मेटालिकम. राइट, अब ऐसा क्यों? बिफोर आफ्टर किस मेडिसिन को यूज नहीं करेंगे हम जिनका एनेमिकल रिलेशनशिप होगा. सो इसमें क्या है कि यस, ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, तो ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे सी. ओके, next is which of the following symptoms are characteristic of nux moscheta. Nux moscheta के characteristic symptom क्या क्या है देखते हैं. First is rheumatic affection of right shoulder which is ameliorated by cold wet weather. Okay, next is vanishing of thoughts while reading, talking or writing. C is great dryness of mouth, no thirst.
D is great soreness of all parts on which one lies. Okay, soreness of all parts on one lies. And E भी दिया हुआ है, changeable humor, one moment laughing, the next crying. Choose the correct answer from the option given below. तो अब इसमें से कोई चार आंसर्स जो है वो करेक्ट है, आपको गैस करने कौन कौन से है. ठीक है, इज इट A, B, C and E, इज इट B and C only, और इज इट B, C and E, इज इट B, C, D and E. ओके, कौन कौन सा करेक्ट है बताओ. तो पहले तो नक्स मोचेटा हमने पढ़ी है या नहीं, हमें ये देखना है. ठीक है, अब पढ़ने के बाद सबसे कॉमन जो चीज़ है वो हम करेक्ट कर लेंगे. क्या है कि ड्राइनेस ऑफ माउथ वाला चीज़ करेक्ट है, और उसके बाद और क्या क्या करेक्ट है, लेट्स चेक. ओके, सो क्या पूछ रहा है उन्होंने, क्या बोला है कि रूमेटिक अफेक्शन होता है राइट शोल्डर का. ये करेक्ट है या नहीं है, लेट्स जस्ट चेक. Rheumatic affection from getting feet wet from exposure to draft of air while heated, aggravation in cold and wet weather और cold wet weather of left shoulder. क्या बोला है इसके अंदर, ऑफ लेफ्ट शोल्डर, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ऑफ राइट शोल्डर. ओके, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है फिट, राइट, रॉन्ग. नेक्स्ट जो दिया हुआ है वैनिशिंग ऑफ थॉट्स वाइल रीडिंग, टॉकिंग और राइटिंग. अभी देखो, अगर आपको यही सबसे पहले अगर पता है, एक सिम्टम अगर आपको अच्छे से पता है कि नहीं राइट नहीं लेफ्ट शोल्डर होता है नेक्स्ट मोजेटा में, तो अब क्या हो गया ना, आप ये सारे ए नहीं है, इसका मतलब आप क्लियर हो गए कि ए ऑप्शन नहीं है. अब क्या कर सकते हो आप कि बाकी और अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसा पहले ऑप्शन आप सारे इसमें से चेक कर लो जिसमें ए नहीं दिया हुआ है. ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है दिया हुआ, मतलब ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है उसके अंदर है A, B, C एंड E करेक्ट है. तो अब ए तो करेक्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन हट गया. ओके, ये इलिमिनेट कर दिया हमने. दूसरा ऑप्शन बच रहा है दैट इज B एंड C, तो ये हो सकता है. तीसरा ऑप्शन जो है उसमें भी B, C एंड E है, और फोर्थ ऑप्शन में भी B, C, D एंड E है. तो मतलब A नहीं है, बाकी के तीन में से आपको कोई एक सेलेक्ट करना होगा. तो हम नेक्स्ट देख रहे हैं. तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि B जो है B, C, ये दोनों भी तीनों भी नेक्स्ट तीनों ऑप्शन में B और C दिया हुआ है. इसका मतलब ये दोनों भी चीज करेक्ट है, दोनों भी पॉइंट्स करेक्ट दिए हुए हैं. आपको डिफरेंशिएट सिर्फ E और D में करना है. तो देखते हैं, पहले तो B ऑप्शन क्या है देखेंगे. B ऑप्शन इज वैनिशिंग ऑफ थॉट्स व्हाइल रीडिंग, टॉकिंग और राइटिंग. ऐसा होता है क्या, वैनिशिंग ऑफ थॉट्स इसके अंदर होता है. So yes, vanishing of thoughts while reading, writing or talking. Okay, uses wrong word. So ये भी correct है. C दिया हुआ है great dryness of mouth, हमें पता ही है. No thirst, ये तो इसका classic symptom है. So yes, that is again great dryness of mouth is correct. Now fourth one, yes sorry, D जो है वो देखते हैं. D में बोला है कि great soreness of all the parts on which one lies. Okay, जहाँ पर लेटेगा उस पार्ट में उसको soreness फील होती है. तो ये करेक्ट है या नहीं, इसको चेक करेंगे. ठीक है, सो सोरनेस ऑफ पार्ट्स, ग्रेट सोरनेस ऑफ ऑल द पार्ट्स अपॉन विच वन लाइज, ये करेक्ट आंसर इसमें दिया हुआ है. ठीक है, सो यस डी इज ऑल्सो करेक्ट, ग्रेट सोरनेस है. और लास्ट दिया हुआ है चेंजेबल ह्यूमर, वन मोमेंट लाफिंग, द नेक्स्ट क्राइम. ओके, चेंजेबल ह्यूमर है यानी इसमें चेंजेबल ह्यूमर, वन मोमेंट लाफिंग, द नेक्स्ट क्राइम. ओके, सो ये सारे हमने बुक में से डायरेक्ट देख के कंफर्म कर लिए. तो हमारा ऑप्शन हमें पता चला कि जो ए आंसर दिया हुआ था, ए ऑप्शन दिया हुआ था वो रॉन्ग था. बाकी का B, C, D एंड E ऑल आर करेक्ट. ओके, सो आंसर इसका जाएगा ऑप्शन नंबर 4, B, C, D एंड E. ठीक है. After this, we have next question that a patient who is easily offended cannot bear contradiction and has a feeling that time passes too quickly requires. Okay, ये सबसे easy है. Time passes too quickly बोला तो बहुत कम मेडिसिन है ना, slowly में थोड़ी ज़्यादा हो सकती है. तो कौन कौन सी मेडिसिन है बताओ. एंटीक्रूड ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज एंटीक्रूड, ऑप्शन बी इज कॉक्यूलस इंडिकस, ऑप्शन सी इज कॉफिया क्रूला एंड फोर्थ वन इज नक्स मोचेटा. तो क्या क्या है, पेशेंट बहुत इजीली गुस्सा हो जाता है, ऑफेंडेड हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन बेयर नहीं कर पाता है, और उसको ऐसा फील होता है कि टाइम बहुत फास्ट चला जा रहा है. ऐसी कौन सी मेडिसिन है. ओके,
This medicine is Cocculus indicus. Okay, the answer is Cocculus indicus. Next is the remedy needed by patient with menstrual irregularities having complaints from grief. Okay, menstrual irregularity है तो किस वजह से हो रही है? Because of grief. Okay, who feels she has neglected her duty, who likes to be alone and refuses food because it tastes too salty. कौन सी मेडिसिन है कि फीमेल रेमेडी है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है, ग्रीफ की वजह से है, ग्रीफ की वजह से है, और उसको ऐसा फील होता है कि उसने अपनी ड्यूटी निग्लेक्ट की है। ओके, अकेले रहना उसको पसंद है और खाना खाने का मन नहीं करता बिकॉज खाना जो बहुत ज़्यादा सॉल्टी फील होता है। सो ऑप्शन आर एक्टिव समोसा, बी इज ऑरमेंट, सी इज साइक्लामेन एंड डी इज इग्नेशिया। ओके, अब इसमें आपको सिर्फ एक ही सिम्टम जो है वो आप सारी मेडिसिन से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। द मेडिसिन इज हु फील्स शी हैज निग्लेक्टेड हर ड्यूटी। इसी पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपको मेडिसिन क्लियर समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, let's confirm again, that is correct. So sorry. From duty not done or bad act committed, right है। So the answer is cyclamen. Okay, cyclamen में आपको एक लाइन डायरेक्ट मिलेगी, elements from suppressed grief and terror of conscience, from duty not done or bad act committed. Okay, from duty not done or bad act committed. The answer is cyclamen. Now, according to Dr. Boric, which remedy has as its greatest indication in heart diseases? That is failure of compensation, especially when auricular fibrillation has sets in. इस मेडिसिन में दिया हुआ है, बोरिक में ये मेडिसिन दी हुई है और इसका इंडिकेशन है कि हार्ट पे ये मेनली एक्ट करेगी, और जहाँ पर फेलियर ऑफ कंपेंसेशन होता है, जब ऑरिकुलर फिब्रिलेशन होना स्टार्ट हो तब इस मेडिसिन को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शंस आर कैक्टस, डिजिटालिस, कैल्मिया और नाजा, विच इज द मेडिसिन करेक्ट मेडिसिन। Okay, so according to Dr. Boric, the medicine is digitalis. Okay, answer is digitalis. Now next is so that is, I think, और तो नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, but almost no. So that was all 2021 में ये क्वेश्चन सारे थे मटीरिया मेडिका से रिलेटेड। ओके, एंड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, ठीक है, लेकिन थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस थे जहाँ पर आपको इन डिटेल स्टडी थोड़ी चाहिए। ठीक है, तो आपको यू हैव टू फोकस मेनली ऑन, अगेन आई एम सेइंग सेम थिंग, यू हैव टू फोकस ऑन रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज, ऑन द कॉमन नेम ऑफ द रेमेडीज, ओके, ऑन द फैमिलीज ऑफ द रेमेडी। ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें से देखिए आप बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन इस एग्जाम में आता है 2025 में, तो आपने उसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक है, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग द रिपीटिंग द सेम थिंग। जब अगर कोई क्वेश्चन इन सारी चीज़ों में से आपके पेपर में आएगा, सो आपको मेरी बात याद आएगी। ठीक है, तो इसीलिए आप मेरी बात को मानो और अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करते रहो। ठीक है, and yeah, that was all for today. Thank you so much for joining.